Good evening, everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma, and through this session, we aim at clearing all your preparatory doubts regarding English and critical reasoning. Am I clearly visible and audible, everyone? Can you hear and see me clearly? Good evening, everyone. Good evening, Akshit, Mansi, Muskan, Moviz. I've been really good. I hope you guys have been good too. I hope I'm clearly visible and audible too. Good evening. Alright, so before we start off with our session, ma'am, मैं CR last में करती हूँ अच्छा, give me 2 minutes, okay? I'm really happy to see you as well, Pragati. Just give me 2 minutes, okay? Before I take up any doubts, because before everything else, I need to put you on a pedestal, and that is to know that what are the programs that we're going to have. So we have a mega workshop on 12th of November where Abhimanyu sir is going to explain what is the right time to start your preparation for CLAT 2023. The session is going to be at 8 p.m. Bookmark Karlo session is going to be a live session. Make sure you don't miss out on this very interesting session. 2. If you're targeting CLAT 22, we have a new batch that we have recently launched. It's a bilingual batch, batch 5. तो अगर ये बैच आपका टारगेट है, अगर आपका टारगेट 22 है, जल्दी से एनरोल कर लो उसके लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अनदर बैच दैट्स इन इंग्लिश. 22 का जो बैच 5 है, विच इज इन इंग्लिश. आई विल बी टीचिंग इन द बैच दैट्स इन इंग्लिश. तो अगर ये बैच आपका टारगेट है, इसके लिए भी जल्दी से एनरोल कर सकते हो आप. अगर 2023 आपका टारगेट है, लेटेस्ट बैच बैच 6 है, इसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, इसीलिए टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से एनरोल कर लो 2023 के लिए भी. So that is about it. Now, shoot your questions. Oh yeah, background. Why don't you come at 10 a.m.? Why not? Okay, so Shambhavi का क्वेश्चन है, मैम मैं CR लास्ट में करती हूँ और मॉक में स्कोर कम आ रहे हैं. What I'm going to explain now, I think should help most of you. ठीक है? So आप जब भी मॉक लेते हैं, आपके मॉक लेने की हमेशा एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? और अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के मॉक ले रहे हैं, आप कभी भी मॉक ना टाइम पे खत्म कर सकते हैं और ना उसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं. अब स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी इज डिसाइडिंग व्हाट सेक्शन टू टेक इन द बिगिनिंग and then how to go about the mock and what section to take in the end. So when you say you're taking CR in the end, I'm assuming CR is one of your weakest sections. So when you take a section in the end, you are putting this into your head that if there's no time, I'm going to leave this section. I'm going to leave the questions of this section. So it's always recommended that you pick up a section that takes lesser time towards the end, or possibly a section that you're weaker at towards the end. So even if you leave questions from a section that you're not really good with. So I'm assuming you're not really good with critical reasoning. 2, if you are unable to finish mock in time, you have to allot time to each section. So English में roughly 20-25 minutes, Maths में 10 minutes, GK में 10 minutes, and then so on. आप divide करो timing. Or if you are dividing 20-25 minutes for English, for example, you have to stick to that timing. You can't make it 26 minutes then. You have to end that section at 25 minutes only. In the end, if you have more time left, you can pick up those questions that you had left. Okay? So, I hope I make sense how to handle the entire mock. Now, there's another common question that I kept getting in my Hindu editorial class. Before I read all of your statements, I have to answer this. A lot of people have been struggling with how to read the editorial effectively. There are 2 ways of doing it, okay? 1, you do the entire editorial on your own, or 2, you come to my Hindu editorial classes, okay? But even if you come to my Hindu editorial classes, you have to read the remaining articles on your own. Now, how to read them? If you have never been reading newspapers, you start with 1 article daily, okay? You read 1 article and pick up an article that you're comfortable with. So, for example, COVID, you know everything about COVID, you know everything about Omicron and the booster doses that are, there's a planning, it's in the pipeline. So, you can read that article that you're comfortable with. And then you can gradually move on to 2 articles and 3 articles and choose articles that you're not comfortable with. In a month, you would be overwhelmed at times with the newspaper because it's too much to read.
But every day in my Hindu classes, towards the end, I tell you the important articles that you should be reading. So read those articles and leave the remaining articles which I say are not necessary. उनमें कुछ articles पढ़ लो. Overwhelming होगा for 1 month, but you have to keep patience. You have to be consistent with it. Regularly पढ़ोगे, you'll fall in love with that. आपको उसमें से important words निकालने हैं, याद करने हैं. You have to revise them. These are the only 2 things you need to do: comprehend and vocabulary. That is all for it. Okay? Now, मैम मॉक जनवरी से देना सही रहेगा? निशा, मॉक अभी से देना सही रहेगा. जितना जल्दी मॉक दोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए. By my words. Ma'am, what should be a strategy for CLAT preparation? Pragati, and for everyone, there is one key word I keep repeating. I'll repeat this in my class again today. People who've been studying with me, do you know what word is that going to be? It's going to be, I'm going to write it bold at the top of the screen. It's going to be consistency. The right strategy for your CLAT preparation does not matter how many hours you give, does not matter how many mocks you give. It requires regularity. Regularity of mocks, regularity of questions, regularity of classes, regularity of newspaper. If you aren't regular, GK, reading, vocabulary, legal, all is going to go out of the window. Regularity is the key to ultimately ace CLAT. याद रखना ये चीज. इसको लिख लो boldly, एक चार्ट पेपर में stick it. I have to be regular with my preparation. I have to do things daily. Maybe 2 hours daily, maybe 10 hours daily. It depends how much time you can take out. I don't care about the number of hours. Yes? Okay. Ma'am, I'm really struggling with preparation strategy. Strategy ये है कि अपनी weakness identify करो. कौन से sections आपके weak हैं. Strength वाले sections में भी अपनी weakness identify करो. किस तरह के question आपके गलत होते हैं. Identify them. Work on your weakness regularly. Because it's a paper that cannot be done in a day. You cannot master it in a day. You need regular practice. तो इसलिए identify your weakness, और weakness पता करने के लिए mock देना जरूरी है. तो mock दो. And please help me with vocab. I always get confused with words. Neha, I hope you've been working on vocabulary. If you haven't been, I'll tell you exactly a few things. कैसे आपको work करना है vocabulary पे. You have to be regular with the newspapers vocabulary. There are something called high frequency words. High frequency words ही एग्जाम में आते हैं मोस्टली. उनका contextual usage आता है. तो randomly memorize नहीं करने हैं words. You have to identify words, difficult words that are seen every day in the newspapers, in the mocks, in the reading comprehensions that you solve. Take them out, jot them down in a notebook, memorize them. Apart from this, you can solve Word Power Made Easy. It's an excellent book. It will give you an insight of a lot of vocabulary. So work on these 2 things. Newspaper vocabulary and Word Power Made Easy. That should help you with vocabulary. Okay? But GK रोज करती हूँ editorial और news. अगर आप ये रोज करते हो ये बहुत अच्छा है. अभी भी बोर्ड्स और क्लैट दोनों का प्रेशर है. ये बिल्कुल रहेगा 100 में एंड तक रहेगा. ये तो हमारा चॉइस है. हम बोर्ड्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं. बट आप लकी हैं कि आपके बोर्ड्स 2 पार्ट्स में हो रहे हैं. आप लकी हैं कि आपका बोर्ड्स ऑब्जेक्टिव पार्ट में हो रहा है. आप लकी हैं कि आपके स्कूल काफी लीनियंट है. ऐसा हमेशा नहीं होता था. सो द स्ट्रेस शुडंट बी सो मच. हर बोर्ड में इतना गैप है. अभी 10th वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में 10 डेज का गैप था. इंग्लिश में 10 डेज का गैप. तो वो 10 डेज कैसे यूटिलाइज करोगे? क्लैट की प्रिपरेशन करके. क्लैट की प्रिपरेशन आपको छोड़नी नहीं है बोर्ड्स के टाइम. जस्ट रिमेंबर दैट. मैम मॉक के टाइम बोरियत फील होती है. और मैं कुछ नहीं. आपको इतने मॉक देने हैं कि आपकी बॉडी को आदत पड़ जाए कि यही मेरा अल्टीमेट एम है. 2 घंटे मुझे बैठना पड़ेगा. मेरे पास चॉइस ही नहीं है कोई. फोन ऑफ कर दो. इंस्टाग्राम, फेसबुक लॉक्ड आउट. टेल यू मॉम नॉट टू डिस्टर्ब यू. नो चाय, नो कॉफी इन बिटवीन. Sit for 2 hours in the afternoon every day. Not every day, whenever you sit for a mock. Every week, afternoon में फिक्स कर लो एक डे. संडे मॉक देना है. नहीं फिट करोगे तो आपकी बॉडी को आदत नहीं पड़ेगी उस चीज की. You have to get used to it. When to start giving mock as soon as possible, Deep. As soon as possible. You might feel मेरा तो कोई कोर्स नहीं हुआ. I haven't studied anything. It's okay. What a mock teaches you, no teacher can teach you in the class.
No trainer, no guide, no mentor can do it. You have to sit for a mock, and then the mock will teach you a lot of things. The pressure, the boriyat, like people said, the time management, your weakness, your strengths. You have to identify all of this, and only a mock can teach you that. Give a mock. You may be depressed with your first mock scores. It's okay. We know where to move, what direction to move ahead in. मैम समझ नहीं आता है कि कहाँ गलती हो रही है प्रिपरेशन में क्योंकि स्कोर कम हो रहा है मॉक में. ओ मुस्कान, दैट्स वियर्ड बिकॉज कंसिस्टेंट स्कोर इज ओके बट कम नहीं होना चाहिए मॉक. आप एनालिसिस करते हैं मॉक के बच्चे? मुस्कान, एनालिसिस करिए, देखिए कहाँ गलत हुए, किस सेक्शन में गलत हुए, किस तरह के क्वेश्चन गलत हुए, उनकी प्रैक्टिस करिए. मैथ्स में 2 नंबर आए, ये पूरा वीक मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगी, फिर मॉक दूंगी, फिर देखते हैं मैथ्स में इंप्रूवमेंट होता है. लीगल में 10 आए 50 में से, 20 आए 50 में से, क्वेश्चंस नहीं देख पाए तो स्पीड की प्रॉब्लम है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करूंगी. दैट इज व्हाट एनालिसिस इज. Is it good to drop a year? Soumya, I don't think you should be thinking about that right now. We'll talk about it after your results are out. Why are you thinking of doing it right now? पहली हार मान लोगे क्या? नहीं ना, योद्धा हो ना आप, योद्धा की तरह लड़ना है ना. You can't do this. You're a warrior. Just put your best foot forward. Rest, we'll decide later on. Ma'am, but course isn't complete. I knew this answer is going to come. Course wouldn't be completed till May. Can we wait till May? Till the last day you'll feel. Guys, okay, so remember this. Whatever I'm saying comes out of my 11 years of experience teaching CLAT kids. 11, not a less time. So what I say, you have to trust me. There may be doubts in your minds, which is okay. Till the last day, you would have this feeling, oh, I should have done this chapter again in GK. Or maybe maths, I should have practiced more questions there. There is no course for CLAT. It's humongous. You just cannot wait for the course to end. With the course, while the course proceeds, your scores would also improve. Okay? How often should we attempt sectional tests? As much as you can. Mocks, as much as you can. But make sure, Palak, you don't compromise on your practice. That is theoretical practice. It's a good score, Deep. I'm totally depressed. क्या पढ़ूं और कितना पढ़ूं? Okay, now, yes, Devanshu. That's a common thing with a lot of people now. क्या पढ़ना है? कैसे पढ़ना है? I think ये बहुत सारे लोगों को bother कर रहा है. And the botheration is normal because you have, it might be overwhelming. You have your boards also on your head. And the course is huge, as I said. GK, there's no specified course. RCs, how many RCs? How many vocab should you be doing? There's no course. So, remember something. Okay, listen to me before anyone posts any question. Listen to me carefully, everyone. This is for every single person live here. This is only and only an examination. Okay? And it needs efforts, but this does not determine your life. Put in your best foot forward. Take up one thing at a time. Make a target. Achieve that target. Put in effort to achieve it. My target, I should be doing permutation combination today. Or maybe 2 chapters. Or maybe within 2 days, I need to finish permutation combination. So it might take 2 hours. It might take 4. Give it as many hours as it needs. Finish that target. Take baby steps. Because अगर आप overall picture को देखोगे, the picture is big. But it's a jigsaw puzzle. है ना? तो एक एक पीस जब हम लगाते हैं तब बड़ा पजल बन के आता है, पिक्चर बन के आता है. धीरे धीरे पजल के पीसेस फिट करोगे तब आपको ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा. धीरे धीरे अपने एफर्ट्स बनाओ, एफर्ट्स डालो, एक एक छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनको अचीव करो. बड़ा टारगेट है क्लैट क्लियर करना. सब चीजों को एक साथ देखोगे ओवरवेलमिंग होगा आपके लिए. ओवरवेलम नहीं होना है, काम रखना है और मेहनत करनी है. यस मैम, ऐसा कोई कोर्स नहीं जो स्पेसिफिकली क्रिटिकल रीजनिंग के लिए हो. प्रतीक, माई इंग्लिश एंड सीआर बूस्टर कोर्स. आई टीच ओनली इंग्लिश एंड सीआर इन दैट बैच. मूवीज इतने दे दो कि डर ही खत्म हो जाए आपके लिए. इट्स जस्ट अनदर डे. मुझे यूट्यूब में लाइव आने पे डर लगता था. मुझे लगता था ओ माय गॉड, व्हाट इफ समबडी डज नॉट लाइक हाउ आई स्पीक, व्हाट इफ समबडी सेज समथिंग बैड टू मी.
अब मैंने इतने YouTube लाइव ले लिया, मुझे डर ही नहीं लगता है. That's how you deal with your fears, है ना? Ma'am, do CLAT 2023 aspirants also get a second chance the same year? They do, but you can sit for the next examination as well. That's in December, but ultimately your session would start only in May, June, July of 2023. So eventually 1 year का gap आएगा. Sometimes I found two options are very, very difficult for me. Karthik, that happens with a lot of kids. अगर दो क्लोज ऑप्शंस हैं, आप सही ट्रैक पे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे. तो रैंडम ऑप्शंस पे आप सही ट्रैक पे नहीं हो, तो यू आर एट द राइट ट्रैक. नाउ हाउ टू एलिमिनेट क्लोज ऑप्शंस? आपको बहुत माइन्यूटली उनके डिफरेंसेस पे काम करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑप्शंस? ईच वर्ड केयरफुली. वन वर्ड कैन चेंज द होल गेम ऑफ द टू ऑप्शंस. वर्क on each and every word of the two closed options and see how are they different from the context of the passage, and that's how you eliminate. हम 22 वाले भी दे सकते हैं, December 23 वाला एग्जाम दे सकते हैं भूमिका, बट इवेंचुअली आपका सेशन 1 साल बाद ही चालू होगा. एग्जाम 6 महीने पहले हो रहा है, सेशन 6 महीने बाद ही चालू होगा, तो 1 महीने का गैप फिर भी 1 साल का गैप फिर भी आ जाएगा. हम करंट अफेयर्स भी सता रहा है. इज दैट व्हाट यू सेइंग? ये लास्ट तक होगा. जीके तो सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत एफर्ट मांगता है, और अपने स्कूल में तो एफर्ट किया नहीं इस चीज, अभी तो एफर्ट लेगा ना वो. मैम प्लीज गो विथ माय क्वेश्चन. सौम्या, व्हाट्स योर क्वेश्चन बच्चे? आई थिंक आई आंसर्ड अ कपल ऑफ योर क्वेश्चंस. कैन यू प्लीज पोस्ट इट अगेन? Pragati, if it's taking 1.5 hours, it's good. If it's taking more, you have to identify what to read, what to leave. Not everything is important. 1.5 hours लेगा. Ma'am, how to increase CLAT number? Keshav, I wrote that down. I think I should write that down again. That's my favorite word. Regularity. Identifying your flaws, identifying your weakness, identifying your mistakes, never repeating them again is how you increase. Newspapers में क्या क्या पढ़ना है? Rinesha, every day in my 10 a.m. Hindu editorial class, towards the end, I tell you क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. Please वो राउंड अप देख लो. रफली 10:45 10:50 तक वो राउंड अप हो जाता है. रोज वो अपलोड होता है वीडियो मेरे हिंदू एडिटोरियल क्लास में. देख लो और आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ना है. ओके मैम, एडिटोरियल पढ़ना है ओनली न्यूज़पेपर से? नो भूमिका, द इंटायर न्यूज़पेपर. हाउ वुड यू डू करंट अफेयर्स? You have to do it from the remaining paper. And my English is so weak, how can I improve? Shikha, please be very, very regular with your newspapers. Read newspapers every single day without fail. Read the editorials. When I say newspapers for English, I mean editorials. Read them thoroughly. Read, take out vocabulary. Break them down. Be regular with my Hindu classes. I'll tell you how to read editorials. मैम, इस बच्चे को मॉक के सारे क्वेश्चन पहले तो हो नहीं पाते, ओके, और जो हो पाते हैं वो भी सारे राइट नहीं जाते. राइट तो टॉपर के भी नहीं जाते बच्चे ट्रासिक, लेकिन सारे हो नहीं पाते. उसके लिए आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा. आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते हो ट्रासिक. इसका मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो. अगर आरसी की प्रैक्टिस करो, आज 4 आरसी के, तो चारों आरसी टाइम बाउंड होने चाहिए. मुझे 10 मिनट में करने हैं या 15 मिनट्स में करने हैं. ये टाइम बाउंड नहीं करोगे तो नहीं होंगे. प्रैक्टिस टाइम बाउंड करोगे, स्किमिंग करोगे, तब पेपर कंप्लीट होगा. स्ट्रैटेजाइज करोगे कि मुझे इंग्लिश को 25 मिनट देने हैं, मैथ्स को 10 मिनट देने, 10 से 11 मिनट नहीं देने हैं. मैम, इज इट राइट टू रीड नॉवेल्स इन फ्री टाइम? ऑफ कोर्स इट इज. ऑफ कोर्स, यस आशीष, ये इट इज. हम स्पीड से रीड करते हैं तो समझ नहीं आता, और ठीक से तो टाइम बहुत लग जाता है. भूमिका, क्या आप स्किमिंग करते हैं? भूमिका, आई थिंक आपको मेरे एडिटोरियल क्लासेस में आने की जरूरत है. आपको स्किमिंग भी समझ में आएगा, आपको स्पीड से अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे समझना है वो भी आएगा. लेकिन याद रखना बच्चे, ये एडिटोरियल क्लासेस ओवरनाइट हेल्प नहीं करेंगे आपको. आपको मिनिमम 2 मंथ्स रेगुलरिटी के साथ देखनी पड़ेंगी ये क्लासेस, रोज सुबह टाइम पे. मैम प्लीज लिसन, हाउ मच लॉ एंट्रेंस एग्जाम? ओह ओके, यस दैट्स अ गुड क्वेश्चन. कौन कौन सी एग्जाम देनी चाहिए? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होगा ये. आई विल आंसर दैट इन सिंपल वर्ड्स. यू गो टू अ वेडिंग, ओके, और वेडिंग में एक काउंटर है मिठाई का और उसमें सिर्फ एक आइसक्रीम है. मुझे वही आइसक्रीम खानी पड़ेगी चाहे वो मुझे ना पसंद हो. बट अगर मेरे पास में 4 फ्लेवर के आइसक्रीम भी है, 4 फ्लेवर के
rasgullas and gulab jamuns and every other sweet, and then I choose, oh, this is my favorite. Isn't that going to be great? Fill as many forms as you're financially capable of, so that you have a plateau to choose. Okay? The session is only on YouTube? Yes. Yes, Ranganath, only on YouTube. Ma'am, क्या grammar depth में पढ़ना जरूरी है विशाल? Yes, because I don't know if CLAT throws a new variant to you, like COVID. So, please do grammar. Do not leave anything that has come in the history of CLAT. I'm confused whether I should enroll in bilingual comprehensive batch or the English comprehensive batch. Ashita, it depends how comfortable you are in English. If you're comfortable with English, enroll for the English one. But if you're not comfortable with completely English, then you have to enroll for the bilingual one. I am someone who skips every wedding but gets... Okay. What should I do to overcome this problem? Movies, what problem? Ma'am, I read the passages in hurry, because of that I'm distracted from the original idea. Movies, mind mapping, mind mapping. सिखाया था हिंदू क्लास में, रिमेंबर. मैप करना, आपको ब्रेक करना है. जल्दी पढ़ना है लेकिन ब्रेक करके पढ़ना है. पिक्चर बनानी है ब्रेन में. Mind mapping is the answer to your question. I have a feeling that reading all your chats like this every day would be a great reading exercise, just as good as an editorial. But not with as good vocabulary as editorial classes have. How to improve grammar? Ranganathan, you're enrolled in one of my batches. Just be regular with the grammar classes and solve those chapters only that I ask you to. Not everything, okay? And please answer my question. Newspaper से notes बनाना है या नहीं? बिल्कुल बनाना है आलोक, absolutely बनाना है. Current affairs के notes भी बनाने हैं और vocabulary के notes भी बनाने हैं. When you do it with your own hands, it's easy for you to recall that. It's pure data. You have to remember the data. मैम, मेरे घर सिर्फ हिंदू न्यूज़पेपर आता है और इंडियन एक्सप्रेस नहीं आता है. दोनों पढ़ना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है रिनेशा, but Indian Express online is available for free. You just have to log into it. कुछ आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के बहुत अच्छे होते हैं. I would still recommend you read Indian Express, some articles from it daily. Okay? But नहीं पढ़ना है तो आप एक पेपर पढ़ सकते हो अच्छे से, बट अच्छे से पढ़ना उसको. माइंड मैपिंग मैं रोज हिंदू क्लास में कराती हूँ. Ma'am, in CLAT 2021, most of the toppers were involved in group studies. I disagree. No. I disagree. Palak, you don't need that. If you're regular with our classes here on YouTube, on our paid batches, you don't need to do any group studies. I find group studies to be distracting. Daily 20 vocab enough? Yes. I cannot able to read the newspaper, the passage effectively. Ranganathan, bache, see, don't worry. In the batches, we're going to do it. Just be regular. You are a new entrant to our batches. I know that. I know you personally. You just have to be regular with the classes. I'll teach you everything there. Just take baby steps, okay? I'll tell you how to break a passage and read it effectively, how to mind map, how to find the PAC, premise, argument, conclusion. I'll teach you that. Karthik, I found two options different, but they both... I did not get a question, Karthik. मुझे नहीं समझ में आप क्या पूछ रहे हैं. Muskan, you can easily solve previous year RC and CR questions. All the CLAT papers since 2008 are available online for free. If you're not enrolled in the batch, if you are enrolled, then Telegram group mein Gulshan keeps sharing these questions. Ma'am, I will be CLAT 23 topper. I'm telling you beforehand. Yes, Mahi, I would love to see you there. Thank you. Ma'am, I'll be giving CLAT, MHCT, SLAT. Should I attempt LSAT? Priyanka, LSAT. Okay, so I would have taken a separate session on LSAT. But yet, if your family is financially capable of you studying in a general global school, then you can possibly get into it. Ma'am, क्या यहाँ पर RC की क्लास डेली होती है YouTube पर? No. Ma'am, till now my average is 39 and now my tension is proliferating. What to do about this consternation? I'm glad you're using my vocab. But Shasik, can you please message me in Telegram? I think I would like to speak to you. Okay?
मैम आपके क्लास का टाइम मेरे को पता नहीं है, बता दो मैम प्लीज। द पेड बैचेस, ये आपको बेटा डैशबोर्ड पे दिखेगा, द टाइमिंग कीप्स चेंजिंग। मैम आई एम गिविंग क्लैट MHCT, मैंने आपको बताया आंसर प्रियंका। आई फाउंड 2 different options but they both meet my requirement। नो बच्चे, if there are 2 different options there's a difference, both cannot meet your requirement, there's a difference in both the options and only one is the correct answer। Find out the difference. What is one word that changes the whole answer, that changes the meaning of both the options? Work on that option. Please suggest something for improving vocabulary. Jyotika, I just did, but nonetheless I'll repeat that. Please take out vocabulary from newspapers every day. Solve word power maybe. And would solving old CLAT papers would be, oh yes, they would be. Ignoring the GK section, please solve everything else. The pattern, the number of questions pertaining to each section has changed. But each pattern can come back anytime. Please solve all the previous year papers. Ma'am, यहाँ पर Expedia, I answered your question. मैम आरसी पढ़ते टाइम कंफ्यूजिंग होने लगता है, क्या आप माइंड मैप करते हैं विशाल? क्या आप ब्रेक करते हैं पैसेज को मल्टीपल पार्ट्स में? क्या आप उसकी एक बिगर पिक्चर बनाते हैं एंड में? मैम एडिटोरियल, ओपेड, वर्ल्ड न्यूज, फर्स्ट पेज, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, यस शुड बी इनफ। मैम इन मॉक्स आई एम नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 40, सब नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। प्रगति, देन कंट्रोल योर अटेम्प्ट्स। If your negative is too high, control your attempts. You shouldn't be getting more than at least मतलब maximum 30% negative. इससे ज़्यादा नहीं हो सकते आपके। अपने attempts कंट्रोल करिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अभी और मॉक देने से पहले एक बार प्रैक्टिस कर लो 2 वीक्स के लिए और फिर मॉक देना अगला। Can you please recommend the ideal time for solving RC section? Ayushi, the entire English section, not more than 25 minutes. And 1 week में 1 mock sufficient है. Chorus, if you are dropping a year, you need more. If you have your boards, maybe 1 mock every week is enough for now. But after your boards have ended, the first one, you have to give more mocks. All the toppers, if you listen to their stories, they must have given 80, 90, 100 mocks. And will I be able to crack CLAT 22? I'm really scared. Movis, if you believe in yourself, you will be. But if you keep fretting about it, worrying about it, you would never be. मैम NDTV का भी एडिटोरियल एग्जाम में आता है? नहीं विशाल। मैम पेपर पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। वैभव, कितना टाइम लग रहा है? 1.5 आवर तक ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। मैम क्लैट के लिए प्रेशर हो जाता है कभी कभी, क्या क्या करूँ? आलोक, मैंने बताया आपको, धीरे धीरे करो, बेबी स्टेप्स दो, सब एक साथ नहीं होता है। सरदर्द होगा जब आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करोगे। सुबह सुबह उठ के सबसे पहली चीज करनी है, आज का डेली टारगेट बना लो। आज मुझे क्या करना है, मुझे कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, मुझे क्या क्या प्रैक्टिस करना है, और वो टारगेट मीट करो। दैट्स ऑल। बिगर पिक्चर अपने आप बनती जाएगी। मैम, will I be able to? I've answered that question. Is reading Hindu and TOI helpful? TOI isn't. Hindu Indian Express is. Ma'am, you will be teaching in the English batch now? Yes, I will be. I'll be teaching there. And sometimes I got the passage very well, but still I'm unable to solve questions. Oh, okay. When you attempt the questions, make sure you look at the description with the answers, the questions that you got wrong, and what was the reason that you chose an incorrect option, and what was the other option correct that you had eliminated. Because if you get the passage clearly, you should not get the questions wrong. So possibly you are getting a wrong picture of the passage. It could be a possibility. We need to work on that. If you're there in one of my batches, I can help you with that in the classes. Vishal, you have to come regularly to my Hindu class. I'll teach you mind mapping regularly. Skimming mind mapping is what we are working on these days. I know you come to my classes, but regularly I'm not really sure. Ranganathan, you have to call the counselor and who gave you the admission here and ask the counselor to get you into the Telegram batches. And 1 hour to both Hindu and Indian Express editorial in half an hour. Yeah, it's good, Samya. मैम मुझे क्लैट टफ लगता है और एलिट इजी। प्रगति इसलिए क्योंकि क्लैट में रीडिंग ज्यादा है, इसलिए दैट्स व्हाई।
मैम टारगेट करता हूं पर बाद में पूरा डिमोटिवेट हो जाता हूं, तो टारगेट शायद अनअचीवेबल बनाते हो। अचीवेबल बनाओ अपने लिए टारगेट, जितना कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अनअचीवेबल बनाओगे तो डिमोटिवेट होगे। Miss, I personally have started reading in the library during my lectures. Now teachers hate. It doesn't matter. They'll love you if you get into an NL. They'll post your pictures throughout the school. Ma'am, how to study from compendiums? You have to read the whole compendium. Compendium का purpose ही है वो precise है. You have to read the whole of it, Shazia. Okay? Ma'am, editorials पढ़ना ज़रूरी क्यों है? रिनेशा, एडिटोरियल्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एडिटोरियल्स से ही मैक्सिमम पैसेजेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन के आते हैं। एडिटोरियल्स में आपको करंट अफेयर्स भी कवर होता है, एडिटोरियल्स आपको रीडिंग भी सिखाता है, एडिटोरियल्स से ही वोकैबुलरी मोस्टली आती है विच आर कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। सो मत पढ़ो एडिटोरियल्स एंड ओके, बट आप एक रीडर रहो। और एडिटोरियल सबसे आसान तरीका है एक रीडर बनने का, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो एग्जाम में आते हैं। बहुत लाइकली होगा अगर आप लास्ट 6 मंथ से रेगुलरली एडिटोरियल कर रहे हैं तो बहुत लाइकली होगा 2-3 पैसेजेस आ जाएंगे एग्जाम में जो मैं हिंदू क्लास में ले रही हूँ, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर 2 पैसेजेस आए थे एग्जैक्टली वैसे जो मैंने हिंदू क्लासेस में पढ़ाए थे। सो अगर आप रेगुलर हो क्लासेस में आपको वेरी वेरी लाइकली 2 पैसेजेस में भी 3 पैसेजेस एग्जाम में दिख जाएंगे जो मैंने। ओके माय मैम, करंट अफेयर्स कब से कब तक करने हैं? एक्सपीरिया व्हिच ईयर आर यू टारगेटिंग? 22 तो मई से मई तक, 23 टारगेट करे तो दिसंबर से दिसंबर तक। ऑल्सो मैम, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड हाउ वर्ड पावर मेड इजी इज इंपॉर्टेंट। So Shazia, it helps you work on vocabulary in an easier manner. If you can work on vocabulary on your own, it's very good. But if you find vocabulary difficult, word power made easy is a simpler way of working on etymology. Etymology is one of the easiest ways of memorizing vocabulary. That's why it's an effective book. I have no commission. मैम पैसेज पढ़ते टाइम फ्लो ब्रेक हो जाता है। चौधरी हेमंत, माइंड मैपिंग, तुम मेरी हिंदू क्लास में रेगुलरली नहीं आ रहे हो, माइंड मैपिंग करो, ब्रेक करो पैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में। पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है, सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है, थर्ड पैराग्राफ क्या बोल रहा है, लिंक करो इनको, बिगर पिक्चर बनाओ अल्टीमेटली बोल क्या रहा है, लिंक क्या है इन सब में, लिंकेज बनाओ पैराग्राफ्स में, आपको ब्रेक नहीं होगा फ्लो। मैम आई हैव द सेम केसेस प्रगति, एलिट 8th ग्रेड इजी नहीं लगता, बट क्लैट के कंपैरिजन में मुझसे इट्स बिकॉज इट्स रियली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। एडिटोरियल्स इनफ है। तान्या, किस चीज के लिए? रीडिंग के लिए, साथ साथ में आप एडिटोरियल्स करो, aeon.com से कुछ आर्टिकल्स पढ़ो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, शुड बी इनफ। Ma'am, I have downloaded the app for daily editorials where I get daily vocabulary and also attend the daily editorial class. Yes, it's going to be good. Regular हूँ आपकी हिंदू क्लासेस में, that's good. Vinesha, oh, this is way to consume. Sorry, I didn't get you. Ma'am, I have my school in the morning. Is it good to watch recorded? Yes, absolutely, it's good. Ma'am, क्या CLAT की कोई टेस्ट सीरीज है? Yes, you have to speak to our counselors on the number that's given at the bottom bar. What are we supposed to read in today's Hindu newspaper? Okay, let me share. Give me a second. I'll tell you what's the important in today's Hindu newspaper. Let me share. I'll share today's newspaper in my background. Give me a second, everyone. I'll tell you exactly कैसे पेपर पढ़ना है और क्या क्या आर्टिकल्स पढ़ने आज क्योंकि राउंड अप नहीं लिया हमने, अभी करते, 1 सेकेंड लगेगा। Here you go. I hope it's visible in the background. Now see, look at today's editorial. Yeah, this one. So goods and service tax and unfinished agenda, you can only skim about it. People who are not comfortable with what GST is, please read it carefully. Okay, because a passage on it may come in the exam. People who are comfortable with what GST is, only skim. You don't have to read it in detail. This article, green shoots, very, very important. You have to read it in detail. This one, captaincy unlimited, only skim. इसको बहुत डिटेल में पढ़ने का नीड नहीं है, सिर्फ स्किम करना है। Now this becomes a very important passage.
Something of this can easily come in the examination. Make the mental well-being of teachers a priority. अरे हमारी well-being पे भी बात हो रही है. It's very important. Yes, you have to read this thoroughly. Next page. Caught in a zero COVID dilemma. Hong Kong. Huge article, but skim. अब ऐसे passages में क्या करना है? इसको 2-3 पैराग्राफ्स पढ़ो, 2-3 छोड़ दो, एक ओवरऑल आइडिया ले लो. That's how you read it. Got this, everyone? Okay. Ma'am, besides the editorial, there is a huge... Oh yeah, Shazia, this is what it is. You read it, but you don't read it thoroughly. You skim. Read a couple of paragraphs, leave a couple of paragraphs. Have a fair idea of what the author is saying, okay? Ma'am, Sunday को newspaper में editorial नहीं आता, no. तो Sunday को आप aon.com से articles पढ़ेंगे. You know what aon.com is, right? Okay. Give me a second. Let's come back to your session. Okay. All right. I think you've started talking amongst yourselves, so time to wind up the class. I'll see you next Saturday with another Ask Me Anything session. And till then, have a very, very good week. Be regular with my Hindu classes. Be regular with newspapers and articles. Okay? Work really hard. Bye, everyone.